हाय, मैं हूँ निशा रावल और ये है मेरे सुपुत्र काविश। और आज हम क्या करने वाले हैं? कैंडल्स बनाने वाले हैं मदर्स डे के लिए। Wow, give me a high five. That was awesome. मैंने अपनी मम्मा के लिए कार्ड बनाया है For मदर्स डे। स्माइली करके बोलो मम्मा को। हैप्पी मदर्स डे। मुझे तो देखो। हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे। मेरे पास आओ। हैप्पी मदर्स डे। Thank you, baby. I love you. उसको मिलो। काविश, आपने मम्मा के लिए कैंडल बनाया, ग्रीटिंग कार्ड, कितना मजा आया आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। सबसे ज्यादा आपको क्या पसंद आया, कैंडल मेकिंग या ग्रीटिंग कार्ड? कैंडल। मदर्स डे के लिए आप और क्या गिफ्ट करोगे मम्मी को? कुछ गिफ्ट करोगे? हैमली से। हैमलीज से क्या लोगे? हैमलीज से मम्मा के लिए मैं दिखाऊंगा हैमलीज में। कि आपको क्या चाहिए ना? मुझे अपने लिए खिलौना चाहिए और मम्मा के लिए भी खिलौना। जो मम्मा के लिए खिलौना आने वाला है वो भी काविश को ही मिलने वाला है। राइट तो मदर्स डे के दिन काविश को ही गिफ्ट मिलने वाला है बेसिकली, राइट? I would have loved to describe it in a very long format, but unfortunately my voice is gone. I think this evening was so special. Thanks to you guys to make a memory out of this. पहली बार काविश लिखना सीखा है और उसने लिखा है हैप्पी मदर्स डे। सो दिस मैं अच्छा लिखता हूँ अब। हाँ, बहुत अच्छा लिखते हो आप। एंड दिस इज़ अ बिग डील फॉर मी एंड दिस कार्ड इज़ डेफिनेटली गोइंग इन माई मेमोरीज वाला फोल्डर एंड बट motherhood, love you baby. Motherhood has definitely been a splendid journey. I feel that it's got more value to my life. I have a bigger purpose, nurturing a human being and inside your body and then outside your body, and watching him grow is nothing short of a blessing. It's a miracle that I witness every day. And जब पहली बार कुछ सीखता है, especially his first, the way he wrote right now, the way he learns new words, new things in life, और जो कुछ भी हम उन्हें कहते आए हैं बचपन से, जो लोरियाँ भी सुनाई हैं, फाइनली आई थिंक अब वो
उस उम्र का हुआ है जहाँ पे आई फील दैट इट स्टार्टेड बेयरिंग फ्रूट्स. सो इट कम्स टू मी एज प्लेजेंट सरप्राइजेस थ्रू हिज बिहेवियर, द लिटिल चॉइसेस दैट ही मेक्स, and it's amazing. I think motherhood has definitely given a lot of value to my life. है ना? तो मम्मी कहती है कि जब तू खेलने जाती थी बिल्डिंग में तो मुझे बस तेरी आवाज़ आती थी. सो आई वॉज ऑलवेज दिस लीडर, यू नो, कैप्टन ऑफ माई ग्रुप एंड एवरीथिंग. आई थिंक आई सी दैट इन काविश ऑल्सो इन मैनी वेज, दैट ही वॉन्ट्स थिंग्स हिज वे. एंड बट बहुत सारी यू नो सेम्बलेंसेज है. मम्मी कहती रहती तू भी ऐसे ही करती थी, तेरे ही जैसा है बिल्कुल. सो आई थिंक बट मम्मी मुझे ज़्यादा मेरे बड़े होने का वर्जन और काविश के छोटे होने का वर्जन ज़्यादा कंपेयर करती हैं. But lot of ways, I think, but the biggest thing is that he looks like me. I don't think there could have been a bigger gift for a parent when the child looks like them, you know. So हाँ, मस्तीखोर तो हम दोनों ही बहुत हैं और थे, और मैं अभी भी हूँ. तो I think मैं भी अभी भी हूँ. मस्तीखोर. क्या मस्ती करते हो बताओ? मैं सब कुछ तोड़ देता हूँ. सब कुछ तोड़ देते हो. क्या क्या तोड़ा आपने अभी तक? और जो कैंडल मेकिंग किट में से क्या तोड़ा था आपने? मैंने 20 वैक्स ऐसा काट रहा था मैं. 20 वैक्स. मैं अब चाकू से काटूंगा. अच्छा, चाकू तो अलाउड नहीं है आपको. नहीं, आप काट देना मम्मा. और वो फ्रेग्रेंस कौन सी थी जो आपने तोड़ी? छोटी बॉटल में लेमन ग्रास तोड़ दिया आपने वो? हाँ. अच्छा काम किया. हाँ. फिर आपने सॉरी बोला मम्मा को? सॉरी मम्मा. या So they say it takes a village to raise a baby. I have a village behind me too, my staff, my mother. I think that's very important because now that I'm a single parent, I always say that if it takes 2 children to make a baby, that it should take 2 to raise one. But you know, sometimes in life आप ऐसे पड़ाव आते हैं आपकी ज़िंदगी में, ऐसे challenges आते हैं, and you know land up being a single parent. But I have no complaints whatsoever. In fact, I feel it's a very big boon to me, and I feel privileged to take care of my child. I don't think I would want it any other way because, you know, it's always better that the child is in a happy and a healthy environment than to expose him to a toxic environment. And about managing and balancing, I think it comes naturally. When you love somebody, the effort that you put becomes effortless. दूसरों को देखने में लगता है कि my God ये कैसे कर रहा है या ये कैसे कर रही है. But when you love somebody, you know, you tend to just do it, and it doesn't require effort at all. I mean, it just happens, one thing after the other. आई थिंक हर रोज़ वरी करता है, 24 घंटे वरी करता है. जब से मैं उठती हूँ सुबह से लेकर रात को सोने तक वरी करता है. बट देन यू हैव टू पुश दैट थॉट बैक एंड यू हैव टू जस्ट यू नो just push it back and take support of that same thought and apply force to move forward. So I think that it's important to have the right amount of challenges in your life to be able to value, to have that kind of gratitude. तो मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि वरी नहीं करता, ऑफ कोर्स वरी करता है, स्पेशली इन आवर प्रोफेशन, यू नो, बीइंग एन एक्टर, थिंग्स आर नॉट वेरी प्रिडिक्टेबल. यू माइट जस्ट डू अ शो एंड देन यू माइट नॉट डू अ शो फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स. दैट हैपन्स ऑल द टाइम. So yes, there is a lot of unpredictability, but then so far my life has been good. I have learnt many things from my life and I've moved forward, and I'm sure that I have to remain positive and I have to keep my fingers crossed. And वैसे तो इंसान की ज़िंदगी का भी कोई भरोसा नहीं है, नेक्स्ट सांस आया ना आए. सो वी हैव टू बी पॉजिटिव, दैट्स ऑल वी कैन डू. यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, योर मेंटल हेल्थ, योर फिजिकल हेल्थ, योर चाइल्ड्स मेंटल हेल्थ. येस, यू हैव टू कीप द होम क्लीन, यू हैव टू गो टू वर्क, you have to talk to people, you have to go to the salon, you have to do your nails, you have to meet your friends, you have to do all those things. That, I mean, there's no choice. So once you accept the fact कि आपके पास कोई choice नहीं है, so you might as well do it gracefully and with dignity. So I think that's all I think every day. The most important of all values that I want to, you know, instill in Kavish is compassion being the first one. Because compassion is just empathy in action, right? If we teach our children to be empathetic, to understand how the other person feels or how you can feel if you were in the other person's shoes, I think then they automatically start understanding life better
and it just becomes a little more easier, because the moment you understand what the other person feels, then automatically you start having a control and a balance over your words, your actions, your thoughts. So compassion is of primary importance. Second is love, and I think compassion and love go hand in hand, absolutely. And if you have compassion, then automatically you have love, and vice versa. And if he starts having love for, other human beings, for nature, for other living beings, and he starts learning to coexist with nature, I think that is the biggest gift a parent can give their child. And the third is respect. Again, there cannot be any respect without compassion and love. So if he has compassion, love and respect, then he will have it for all things in his life, whether they are materialistic things, whether they are relationships, whether it's education. Me and he say a gratitude prayer every night whenever I have the opportunity to put him to sleep. And in that prayer, we talk about everything, right from the materialistic things that God has given us, whether it's a home, a roof over our head, a car, the simplest thing like a fan, AC, and even lights, and the bigger things, our breaths, our health, the school in which we go, the people who are in our lives, the support that we get. So I think that's of primary importance. बाकी तो इंसान जो लिखवा के आया है वो ना तो कोई दे सकता है ना कोई ले सकता है. So I have made a reel on this mom guilt, how to overcome it, and I'd like you and all the viewers that will watch this to go and see it. Of course, to be able to make any content for a content creator, you need to feel it first. So I have also felt mom guilt, and I feel it every day, especially when I do a television soap जो I was doing 12 hours की shift होती है. फिर यहाँ से my sets were in नायगांव, तो मुझे रोज़ लगता था कि अगर मैं अपने बच्चे के सामने रहूँगी नहीं, अगर मैं उसको पढ़ाऊँगी नहीं, नहलाऊँगी नहीं, खिलाऊँगी नहीं, देखूँगी नहीं कि उसके कपड़े ठीक से धुले या नहीं, आयन हुए कि नहीं, वो सोया है कि नहीं, वो क्या खा रहा है, वो ठीक से खेल रहा है, गिर गया तो चोट लग रही है, डॉक्टर के पास खुद नहीं ले जाऊँगी. सो एम आई रियली गेटिंग टू विटनेस हिज चाइल्डहुड, और एम आई बीइंग अ रियल मदर और अ गुड मदर? That's what mom guilt is all about. But then we have to choose, we have to prioritize. Now I also have to bring bread to the family, and I also have to take care of my child. So I have to prioritize that या तो मैं खुद यहाँ पे रह लूँ physically और हर चीज़ को micro manage कर लूँ, या फिर I bring bread to the house, and then things happen on their own. Because then if I go to work, I get the money, I can hire staff, I can make an ecosystem for my child, I can send him to a good school, I can have good security. So that's more important. So when it comes to prioritization, I know my priorities. So I make sure that, I take time out for him as well. Whatever little time we can, even if it's just 10 minutes, 20 minutes in the morning before I go to shoot, I make sure that in that time we exchange a lot of love, compassion, respect, all those things that we spoke about. Well, I want to say a happy Mother's Day. You deserve to celebrate yourself. I mean, don't think so much. We are all mothers, and we are born with the quality of loving our children. No one can take that away from us. And the question that Vijay asked me about mom guilt, make sure that you don't feel too much of it. A little bit of it is important, but also focus on self-love, because if you're mentally healthy and physically strong, then naturally that's what you give to your child too. So happy Mother's Day. Celebrate yourself. Happy Mother's Day. बोल दो सारी मम्मास को. Happy Mother's Day To all the mammas in the world. To all the mammas in the. to all the mamas in the world. Yes. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day.